Do you know what a hand pump is? I'm sure most of you are thinking about this epic scene from the movie Gadar where Sunny Deol pulls up a hand pump from the ground and starts beating his opponents with that. You know, in the year 1997, when we shifted to Delhi, we used to have a hand pump right in the middle of our house. I'm sure the 80s and 90s kids will relate to this क्योंकि हम सभी ने देखा है and उससे पहले वाले 70s, 60s, 50s और उससे पहले वाले तो definitely relate करेंगे because earlier there used to be hand pump in every single household. लेकिन मैं आज hand pump की बात क्यों कर रही हूँ? Because it is very closely related to the topic that I have got for you today for this episode of my solo podcast series, and the topic is it is journaling. Well, a lot of you have requested me to make a video on journaling and how can we do journaling more effectively. In today's episode, we will be talking about what journaling is, why is it important to journal, what are the benefits of journaling, and is there an effective technique that can help you journal better. सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं What is journaling? Journaling is basically jotting down your thoughts on a piece of paper in a diary or a journal. Basically जो आपके दिमाग में ख्याल है उनको एक पेपर पर उतार देने को journaling कहते हैं. Now ये journaling करने से होगा क्या? लोग इसको करते क्यों हैं? Well, I remember when I was very young, I started writing diary at a very early age. Probably I was 10 or 11 years old. तो जो बातें मैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, किसी से नहीं कह पाती थी, मैं वो एक डायरी में लिखती थी. तो ये तो है एक रैंडम एक्ट ऑफ जर्नलिंग जहाँ आप सिर्फ आप अपने ख्याल लिख रहे हो. बट देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ जर्नल्स दैट यू कैन राइट. दे कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर करियर रिलेटेड गोल्स, फिटनेस रिलेटेड गोल, पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड गोल्स, योर रिलेशनशिप्स, ग्रैटिट्यूड जर्नल. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ जर्नलिंग दैट यू कैन डू. हाँ, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? तो हम सभी की लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम्बिशंस होते हैं. एंड नाउ टू फुलफिल दोज गोल्स वी मस्ट पुट इन द हार्ड वर्क. Now to put in that hard work, we must know कि हमें hard work करना किस चीज़ में है. उस चीज़ को पता लगाने के लिए हमें कुछ decisions लेने पड़ते हैं. To make right decisions or effective decisions, we must have a clear mind, clarity of mind, clarity in our thinking is very important for us to achieve our goals. जब mind में ही confusion होगा, clutter होगा, clarity नहीं होगी, तो हम अपने goals को कैसे achieve करेंगे? मैंने हैंडपम्प के एग्जाम्पल की बात की थी. तो जो हैंडपम्प जब लगाते थे ना, जब उसे खोद के ज़मीन में डालते थे तो एक सर्टेन हाइट के बाद ही पानी साफ आना शुरू होता था. पहले बहुत मिट्टी वाला पानी आता है. यू नो, व्हेन यू डिग अप अंडरग्राउंड, समटाइम्स यू हैव टू गो 60, 80, 100 मीटर्स बिलो द ग्राउंड टू गेट क्लियर वाटर. एंड इसी तरह से जर्नलिंग भी काम करता है. व्हेन यू जस्ट स्टार्ट जर्नलिंग, यू हैव टू मेनी थॉट्स और बहुत सारा क्लटर आप उस पेपर पे, डायरी में लिखना शुरू करते हो. जैसे जैसे आप उस प्रोसेस में और गहरे जाते हो, जैसे पानी क्लियर होता जाता है, वैसे ही आपके थॉट्स भी क्लियर होते जाते हैं. एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट गेनिंग द क्लैरिटी ऑफ योर माइंड, क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स. द कन्फ्यूजन स्टार्ट्स टू फेड अवे. This is what is the main benefit of journaling. This is the main reason why people journal. If I talk about my life, one of the most important areas of my life where I have caused massive breakthroughs is my eating habits. My eating habits used to be very erratic. In fact, मुझे बचपन से एक eating disorder भी है. मुझे पता नहीं चलता है कब मेरा पेट भर जाता है, और मुझे कभी भूख नहीं लगती है. और लेकिन हमेशा मैं बहुत सारा खाना खा सकती हूँ. In fact, I can eat a full blown meal right after finishing one meal. मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा वो लिमिट ख़त्म होता है. तो मेरी ये बचपन से हैबिट्स बहुत ख़राब थी. आई थिंक इन द ईयर 2017 और 18 आई स्टार्टेड राइटिंग अ फूड जर्नल. वहाँ से मैंने अपनी जर्नलिंग की शुरुआत की. एक इफेक्टिव जर्नल लिखना. डायरी तो मैं बहुत पहले से लिख रही थी, बट हाँ, उस जर्नलिंग की हैबिट से मुझे समझ में आया कि मैं खाने को लेकर कहाँ पे ग्रीडी हो रही हूँ, कहाँ पे लस्ट आ रहा है, कहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, या कहाँ पे सिर्फ इमोशंस में बह जा रही हूँ, कब मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रही हूँ. ये सब चीज़ें मुझे पता चली जर्नलिंग के बाद. तो जर्नलिंग के अगर फ़ायदों की बात करूं तो सबसे 4 जो क्लियर फ़ायदे मुझे नज़र आते हैं. द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ जर्नलिंग इज़ दैट इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ अवेयरनेस बाय बिल्डिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू डोंट जस्ट फील योर थॉट्स एंड इमोशंस, यू एक्चुअली सी देम. और जब आप पेपर पे लिखा हुआ देखते हैं तो आपको क्लियर होता है कि आपका माइंड आपको कहाँ पे ओवरथिंक करा रहा है, कहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है, कहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, और कहाँ से फिर आप क्लैरिटी बिल्ड कर सकते हो.
हो, ये सब होगा जब वो आपके सामने लिखा हुआ होगा. द सेकेंड बेनिफिट ऑफ जर्नलिंग इज it increases your emotional intelligence by helping you navigate through your emotions. जब आप जर्नल करते हो, जब आप अपने थॉट्स लिखते हो, अपनी फीलिंग्स लिखते हो, तो आप अपने इमोशंस को भी और ज़्यादा समझ पाते हो. जैसे मैंने फूड जर्नल का एग्जाम्पल दिया था, तो जब मैं अपने इमोशंस के थ्रू वाकिफ होने लगी तो मुझे समझ आया कि कौन से इमोशंस सही हैं, कौन से इमोशंस मुझे बहुत लंबे टाइम तक बुरा फील कराते हैं. एंड व्हेन आई स्टार्टेड गेनिंग दिस क्लैरिटी, आई बिकेम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट एंड अवेयर अबाउट माई ओन इमोशंस, एंड आई वॉज एबल टू मैनेज एंड रेगुलेट देम बेटर. सो जर्नलिंग हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो. Third benefit of journaling is that it reduces your anxiety and stress significantly, because when you journal, then you are no longer letting your mind race into multiple thoughts and multiply the negative thoughts. जब तक आप piece of paper पे लिखते नहीं हो अपने thoughts, तब तक ये negative thoughts आपके mind में multiply होते रहते हैं, and you start creating the problems those don't even exist just by thinking and overthinking your problems, and your anxiety also multiplies. When you start journaling, तो आपकी एंजाइटी डेफिनेटली थोड़ा कंट्रोल में आती है, थोड़ा मैनेज होना शुरू होती है. द फोर्थ बेनिफिट ऑफ जर्नलिंग इज दैट it boosts your creativity and you're able to advise yourself better. You know, we are very good at advising other people, but when it comes to us to apply that same advice, we fail to do so. When you journal your thoughts down, you are actually able to give yourself the right advice, because now you know where you are, where you want to go, where you don't want to go, what are your current options. आप ये सब चीज़ें evaluate करते हो, और ये जब आप evaluate करते हो तो आपका mind problem से ज़्यादा सॉल्यूशंस की तरफ आना शुरू हो जाता है. और जब सॉल्यूशंस की तरफ आप आते हो तो आप नए नए क्रिएटिव तरीके सोचते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. तो ये 4 बहुत ही क्लियर कट फ़ायदे हैं जर्नलिंग करने के. इनमें से किसी भी रीज़न से इफ़ यू आर रिलेटिंग, देन दैट रीज़न इन इटसेल्फ इज़ इनफ फॉर यू टू स्टार्ट जर्नलिंग राइट फ्रॉम टुडे. There are many scientific experiments, those were done to find out that the people who journal about their day led much happier and fulfilled lives than the people who didn't. I'm sure these reasons are enough to convince you to start journaling today. So far we have talked about what journaling is, why should we do journaling, what are the benefits of journaling, and now I'm getting to the most important part, which is how should you journal? What is the right way to journal? So I have a very effective technique for you. It is called the rope technique. This is not from any book. This is my own personal method that I have devised for all of you. The first letter is R, which stands for reflection. When you start reflecting before journaling, you actually start organizing your thoughts. You actually start connecting the dots in your mind. You actually start thinking, where are you today and where you wish to go, and there is some sense of clarity that starts to emerge. सीधा जर्नल करने से पहले अगर आप 5 मिनट लेके थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे तो you will be able to write more effectively in your journal. The second letter is O, that stands for observing. Observe your emotions. The first one is reflection, that is on thought level. Second is observation on emotional level. Before journaling, just see what state of mind are you in. If you're very hyperactive, if you're stressed, then your journaling is also going to be not effective. तो अपने माइंड को काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने थॉट्स का पता लगाना, उन्हें ऑब्जर्व करना, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ योर माइंड इज़ इनटू chaos, just do a simple 2 to 3 minutes of meditation exercise before writing down your journal. That will help you write down a more effective journal. इसके बाद the next letter, the third letter is P, which is for planning. Now that you have reflected upon your thoughts, observed your emotion, third comes is your plan. Now what is it? What are the steps that you need to take to get closer to your goals? What are the skill sets that you need to develop? What are the gaps that you're finding? What is it that you can improve? Write all of that down. This will help you slowly come up with a plan of action to achieve your goals, to make your journaling more effective. And the last alphabet is E, which stands for express. Now express all of that you have thought, reflected upon, observed emotionally and planned onto the paper. Just express it down. जैसा मन में आ रहा है. There is no right or wrong way to do this.
सिर्फ आप लिखते जाइए, एक्सप्रेस कीजिए, धीरे धीरे आपका जो एक्सप्रेशन है वो इम्प्रूव होता रहेगा। जैसे हमने हैंडपम्प की बात की थी, पहले पानी गंदा और मैला आता है, बहुत सारी मिट्टी आती है। उसी तरह से जब आपके थॉट्स एक्सप्रेस शुरू होना होते हैं तो बहुत क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन धीरे 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 जब आप गहरा उतरते जाते हैं अपने जर्नलिंग में, देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर क्लियर एंड योर एक्सप्रेशन स्टार्ट्स टू बिकम मोर एंड मोर बेटर। दिस विल गिव यू slowly over time a huge sense of clarity and a huge gain over others who don't journal. This will build you a mindset that will have a sense of clarity, that will know what actions to take, that will be observant of your emotional state, and will help you design a plan of success for yourself. Journaling is not a magic pill कि एक दो बार आपने लिखना शुरू किया या कुछ दिन तक जर्नल किया तो लाइफ में बहुत मैजिकल डिफरेंसेस आ जाएंगे। Slowly over time, within a month, you will see that your mindset is starting to shift, your thoughts are starting to change, and for that you will have to do it for at least a month to see those changes. Just have the courage to express your most authentic, your raw self on the piece of paper. Let your whole personality come out. Don't shy away. Don't be scared कि कोई पढ़ लेगा, कोई देख रहा है. Just keep it private to yourself. Don't give the access of your journal to anybody if that's the case, and you should not also. And just keep it to yourself. But just be absolutely brutally honest, and then this habit of journaling will truly transform your life. Now, fifth thing that I want to cover is that where should you begin? ये सवाल आप सबके मन में होगा कि शुरुआत कहाँ से करें. So I have 5 easy prompts, 5 easy questions for you from where you can sort of design a framework for yourself. See, there is no right or wrong way to do this. It's a very personal quest. It's a very personal choice. आपके goals बहुत personal हैं, आपके motivations बहुत personal हैं, आपके reasons बहुत personal हैं. तो हर किसी का एक अपना तरीका हो सकता है. But I'm giving 5 simple prompts. Start with how you're feeling today. Start with what you're grateful for. Start with where you wish to go in life. Where do you see yourself in 6 months from now? Start with thinking about your current state of mind. Start with asking yourself about what you learned today. Start with where the gaps were and what can you do to bridge those gaps. These simple questions will give you a simple idea to structure your journaling, to at least start doing it. There can be specific journals for each areas of your life. Let's say there can be a food journal, there can be a goals related journal, there can be a career related journal, there can be a journal related to personal growth, there can be a journal related to financial planning, gratitude journal. So many journals can be there. Let me know if you want me to make a special video on any of the special area that you want to learn journaling in. I'll be very happy to do so. And I hope that whatever I have shared in this video is making sense to you and has helped you to understand journaling deeply, in depth. सिर्फ ऊपर वाला नहीं, but एक in depth analysis आपको इस वीडियो के थ्रू मिला होगा. And if you found this video useful, please do share it with your friends and family. Let me know in the comment section what part did you like the most. And इस तरह की conversation, those are about self-discovery, transformation, habit building, building a growth mindset, spirituality. All these conversations I also do on my podcast called The Journey Within. You must check it out. It is here on this I button, and I'll also link down the podcast in the description box. So you'll find all the links there. I'll see you in my next episode. Thank you for watching this one.